सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। अब सिंपल सी बात है, अगर प्लानिंग ही प्रॉपर ना हो तो कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम फार्मर तक एफिशिएंटली नहीं पहुंच पाएगा। सो फार्मर को क्या प्रॉब्लम है, उन्हें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन या ट्रेनिंग चाहिए, रिसोर्स कैसे यूज़ होंगे, यह सब प्रोग्राम प्लानिंग में डिसाइड होता है। तो हमें इसलिए प्रोग्राम प्लानिंग पढ़ना होता है और ये फुल हमें रटना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। इसीलिए प्रोग्राम प्लानिंग को एक्सटेंशन वर्क का बैकबोन कहते हैं। सो आज इस वीडियो में हम इसका मीनिंग, प्रिंसिपल, स्टेप और इम्पोर्टेंस को ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। सो कैल्सी एंड हर्ने के हिसाब से 1967 में एक्सटेंशन प्रोग्राम क्या है, तो एक स्टेटमेंट है ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम एंड सिचुएशन, SOPS। नाउ सिचुएशन का डेफिनेशन, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दैट इंक्लूड कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल कंडीशन इन विच पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल फाइंड देमसेल्फ एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्लानिंग process which involves study of past and present in order to forecast the future, and in light of that forecast determining the goal to be achieved and what must be done to reach them. Now aim, generalized or broad statement of direction with respect to given activity. Example क्या है कि increase the average wheat yield. अब है ऑब्जेक्टिव, एक्सप्रेशन ऑफ एंड टुवर्ड विच आवर एफर्ट आर डायरेक्टेड। तो एग्जांपल है इसका, रेज द एवरेज वीट यील्ड फ्रॉम 40 क्विंटल टू 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। डिस्टेंस एट विच एनी गिवन डायरेक्शन वन एक्सपेक्टेड टू गो ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गोल, एग्जांपल ऑफ गोल, टू रेज wheat yield in 5 quintal per hectare in current year is distance at any given direction one expect to go during given period of time. Example, to raise the wheat yield by 5 quintal per hectare in current year. Aim includes several objective and goal is a part of objective. Problem, a condition that people have decided to change. Simple problem, if number of causes are few, easy to be identified. Complex problem, if the problem are interrelated, causes are many and difficult to identify. So सिंपल है कि सिंपल प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम का कॉज है वो कम है और वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, बट कॉम्प्लेक्स में वो जो बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं कॉजेज और वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं। अब है सॉल्यूशन, अ कोर्स ऑफ प्रपोज्ड एक्शन टू चेंज एन अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन टू वन दैट इज़ मोर सेटिस्फैक्ट्री। तो एक ऐसा एक्शन जहाँ अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में चेंज हो जाए। प्लान, अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, और प्लान एक ब्लूप्रिंट भी है एक्शन का। प्लान फॉर वर्क मतलब कि एक आउटलाइन है ऑफ एक्टिविटी सो अरेंज्ड एज टू इनेबल एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। Plan of work indicates 5W and 1H, what, where, who, whom, why and how. So यहाँ 5W और 1H मतलब 6 कंपोनेंट तो मेनली होते हैं, what, where, who, whom, why and how. A plan of activity to be undertaken in particular time sequences, calendar of work. तो एक प्लान ऑफ एक्टिविटी है जो अंडरटेक कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम सीक्वेंस में। एक्सटेंशन वर्क ग्रीव आउट ऑफ सिचुएशन। स्टेप जो है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का वो 8 है। स्टेप इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग डिवाइड होता है इनटू 2 फेजेस। एक होता है कि प्रोग्राम डिटर्मिनेशन और दूसरा होता है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। द स्टेज कनेक्टेड टू प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज कैरिंग आउट प्रोग्राम। द प्रोग्राम प्लानिंग आर एजुकेशनल प्रोसेस, यूनिफाइंग द इंटीग्रेटिव प्रोसेस, कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस और इवेल्युएटिंग प्रोसेस। तो प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस जो है एजुकेशनल है, यूनिफाइंग, इंटीग्रेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग और इवेल्युएटिंग है। अब है यहाँ पे नीड, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नीड किसने दिया था, लीगन्स ने दिया था। और द गैप बिटवीन व्हाट इज़ एंड व्हाट ऑट टू बी, इसी को नीड कहते हैं कि क्या है और क्या होना चाहिए, इसके बीच का गैप है नीड। द नीड टू विच पीपल आर अवेयर ऑफ फेल्ट नीड, कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज्ड नीड। द नीड पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ, तो वो अनफेल्ट नीड, अनरिकॉग्नाइज्ड नीड। Felt and unfelt need classified on the basis of psychology. Need defined by what people think or feel about their need is perceived need. Need जो define होता है by number of people who has actually saw help express need.
existence of a standard or criteria established by custom authorized of general consequence against which quantity and quality of situation of condition is measured. This type of need is normative need. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया इस्टेब्लिश होता है और क्वांटिटी क्वालिटी जो है सिचुएशन का उसको मेजर किया जाता है. गैप बिटवीन लेवल ऑफ सर्विस एग्जिस्टिंग इन वन कम्युनिटी एंड देयर एग्जिस्टिंग इन सिमिलर कम्युनिटी ऑफ जोग्राफिकल एरिया इज़ रिलेटिव नीड. अब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो प्रोजेक्ट का डेफिनेशन है ए स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क टू बी डन और प्रोसीडर्स टू फॉलो इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. अब है प्रोजेक्ट एक discrete packet of investment, policy measures and institutional and other action designed to achieve a specific development objective within a designated period. बॉम एंड टॉलबर्ट. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डेफिनेशन टू डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज फॉर इफेक्टिव accomplishment of project. So project management, the planning, scheduling and controlling of project activity to accomplish the desired objective. अब है हेनरी ग्नैट, एक फादर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. अब है ग्नैट चार्ट. तो सिस्टम ऑफ स्केड्यूलिंग यूजिंग बार चार्ट्स और हेनरी नैट. तो नैट चार्ट डेवलप किया था. एक्टिविटी बार चार्ट तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एक्टिविटी. और फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल क्या होता है, आइडेंटिफाई करो, फॉर्मुलेशन, फिर अप्रेजल, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और इवैल्यूएशन. द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द कॉस्ट परफॉर्मेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज बजटिंग. तो प्रोसेस क्या है प्लानिंग का, कॉस्ट परफॉर्मेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, बजटिंग. टाइप ऑफ बजट आर कॉस्ट कैटेगरी बजट एंड एक्टिविटी बजट. Budget in which all the project cost placed under category of expenditure is cost category budget. Activity budget which are not arranged by category of expenditure but by project activity budget. Appraisal, the second look at project report by people who is in no way associated with its preparation. Critical path method, the longest possible continuous pathway taken by initial event to term in an event is critical path method. अब है CPM, वही technique of project management useful in basic management function of planning, scheduling and control. DuPont कंपनी USA critical path method को डेवलप किया था 1956-57 में. CPM is activity oriented. Basic orientation of CPM is deterministic. CPM is used in constructive program. The element that take time, effort and resource to move from one event to another activity. CPM activity present होता है by arrow और arrow indicate करता है energy, time और cost. Length of arrow show का कोई significance नहीं है. Head represent करता है succeeding activity और tail represent करता है preceding activity. Point that make the start or completion of one or more task event. The event is denoted by circle. The left half of circle represents event number. The top segment of right half in circle represent earliest starting point. The bottom segment of right half of circle represent latest starting point. Activity that is used to represent only relative relations among the activities, dummy activity. The activity which do not require any resource, that is money, material, mean and time, is dummy activity. Dummy activity denote होता है broken arrow से. The activity which has no succeeding activity but possesses preceding activity, danglers long path for completing the project is critical path. Activity which fall on critical path having no slack period is critical activity. The value of EST and LST in critical event is same. The time at which activity start and before which activity cannot be start, EST. The time beyond which starting of activity cannot be delayed, so latest starting time, LST. Procedure which start with first event and end with last event of project is forward pass. In forward pass, which value is considered largest convergent EST value. Procedure which start with end value and end with first event of the project is backward pass. In backward pass, which value is considered small convergent LST value. Program evaluation and review technique POT. तो
PERT क्या होता है? एक टेक्निक जो यूज़ होता है फॉर प्रोजेक्ट इनोवेशन एक्टिविटी ऑफ नॉन रिपीटेटिव नेचर, और PERT डेवलप हुआ था 1958-59 में। PERT इज़ इवेंट ओरिएंटेड और बेसिक ओरिएंटेशन क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक। एक कैरेक्टराइज कैसे होता है? अनसर्टेनिटी से। PERT इज़ यूज इन डिफेंस एंड रिसर्च प्रोग्राम। ग्नैट चार्ट यूज फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और लॉजिकल फ्रेमवर्क टेक्निक यूज फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब PRA पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, तो कंसेप्ट किसने दिया था? तो हेनरी फोर्ड ने दिया था। फादर ऑफ PRA रॉबर्ट चैम्बर्स, और इंडिया में फादर ऑफ PRA इज़ नीला मुखर्जी। टर्म PRA was used in Kenya. PRA has its origin during late 80s, 1988 to 89. PRA is introduced in India by NGO. Ideal objective of PRA is employment of local people. The main innovation of PRA is behavior. The role of extension personnel in PRA is facilitator. Insider role in PRA is analyst presenter. Outsider role is initiator catalyst. Principle of PRA is optimum ignorance, offsetting bias and triangulation. Cross checking the data in different ways, triangulation. The book Participation Rural Appraisal Methodology and Application is written by Neela Mukherjee. And the main innovation in compared to PRA, RRA is quicker method. Main innovation in RRA is method. The collection of data in RRA is done by multidisciplinary team. Insider role in RRA is respondent. Outsider role क्या है? Investigator. Ideal objective of RRA learning from inside by outside. Technique of PRA. The technique of PRA divided into three categories: space, time, relation related. Space related social map, resource map, transact, mobility map. टाइम रिलेटेड PRA इंक्लूड करता है टाइमलाइन, ट्रेंड एनालिसिस, सीजनल डायग्राम। रिलेशन रिलेटेड PRA इंक्लूड करता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, वेल बीइंग रैंकिंग, वेन डायग्राम। और डायग्राम डिस्क्रिप्टिंग विलेज लेआउट, रोड, ह्यूमन हैबिटेशन, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, टेम्पल, आंगनवाड़ी सेंटर, cattle, etc. Social map. Objective of social map is to understand various facets of social reality, which is social stratification, demographics, settlement pattern, social infrastructure. Resource map, the map showing mainly available natural resources such as topography, forest area, degraded land, pasture, water resource, agricultural land. Transact walk, exploratory walk undertaken by multidisciplinary team of scientists along with village people to observe, check, cross and critically examine and record minute detail of particular area physically. Mobility map, technique used to explore the movement pattern of an individual, a group or community for various purpose in PRA. Frequency of visit, distance, mode of transport, purpose of visit or accessibility, the information elicited from mobility map. Method of visualizing key historical event and major changes perceived by villagers is timeline. Technique used to explore temporal dimension with focus on change that is variable over different span of time is trend analysis. Technique used to give insight into seasonal variation in rural area related to rainfall pattern, crop rotation, fodder, fuel availability, labor requirement, insect and pest attack, etc. is seasonality analysis. Seasonal diagram is also called as seasonal calendar, seasonal activity profile and seasonal analysis. Cause effect diagram, problem tree, fishbone or Ishikawa diagram. Technique which presents visuality, the cause, effect and their interlinkage, which help in arriving at an in-depth understanding of particular topic and provide scope for analysis and subsequent activity by local people is cause effect diagram. Technique used to understand the local people perception of wealth, well-being and their view on socio-economic disparity between households is well-being ranking method. The PRA technique that represent the degree of importance of individual and institution in decision making, Venn diagram. The circle of Venn diagram representing very strong coincidence will have large overlap.
Method of ranking and scoring reveals priority and preference of villagers is matrix ranking and preference ranking. Participation. The voluntary contribution by people in one or another of the public programs supposed to contribute to national development, but people are not expected to take part in shaping the program or in criticizing its contents. Economic commercial for Latin America 1973, इसी को participation कहते हैं. अब है प्रॉब्लम एनालिसिस. इन कोर्स ऑफ द डायग्नोसिस the various socio-interest group identify major problem is problem analysis. The objective of problem analysis is identify the cause and effect of priority problem indicated by village residents to select most relevant causes. The method and tool used for problem analysis is village introductory meeting problem tree. The objective of village introductory meeting is to make an overview of activity that had been done during diagnostic phase and to present the priority problem to be analyzed in mixed group. In problem tree, the image of tree is used for identifying causes and effect. The root represent causes, the trunk represent main problem, the branches and fruit represent effect and consequence. Participatory approach, different participatory approach, rural, rapid rural appraisal or participatory rural appraisal. PALM, participatory action and learning method. AEA, agro ecosystem analysis. PRR, participatory action research. PAME, participatory assessment, monitoring and evaluation. FSR, farming system research. PRAP, participatory rural appraisal and planning. World appraisal means estimation of the value of an asset or good or act of estimation or assessment of nature, quality and improvement of asset. A multidisciplinary team make use of simple non-standard method and knowledge of local people to quickly elicit, analyze and evaluate information and hypotheses about rural life and rural resource that are of relevance for taking action. RRA. Further evolutionary stage of RRA approach is PRA, the approach in which emphasis is placed on empowering local people to assume an active role in analyzing problem and drawing a plan with outsider, mainly acting as facilitator is PRA. PRA is methodology for interaction with village, understanding them and learning from them according to Neela Mukherjee. PRA is process of involving local people in analyzing and interpretation of rural situation according to GL Ray. The handling over the stick to the insider comes in PRA. The handling over the stick means authority of investigation given in farmers. An approach for learning and organizing participation of local community and group for interaction with them, understanding them and learning from them is PLA. Changing the behavior and attitude of scientists and development staff, that is scientists know everything and father know nothing, is principle of PLA. Agro ecosystem analysis developed in northern Pakistan with the scope of Aga Khan Rural Support Program by Conway, and in early 1980s the combination and interaction of sociological and socio-economic process led to creation of agro ecosystem. The system property are productivity, net output of a evaluated project, stability of productivity under normal condition, sustainability of productivity under stress, and equitable distribution of production and resource and input required to achieve it. Participatory action and learning method developed by MYRADA NGO in Bangalore around 1989. The approach, which uses the key RRA concept but emphasizes participation by village residents and function of externals as catalyst and partner for self-determined development, is PALM. The aim of PLM in the project is to go beyond appraisal, the learning by doing approach in which investigator places his or her knowledge at disposal of local group is PAR. The technique concerned with local people appraisal who live in proximity with such resource and have
close relationship with them is PANR, participatory appraisal of natural resource. PANR differ from PRA in having critical relationship of local people with natural relationship. सो यहाँ ये चैप्टर एंड होता है. मुझे पता है मैंने बस रीडिंग करी है इस चैप्टर की, बट यही है ना कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पूरा रट्टा मारी है कुछ पॉइंट्स से समझने की, जो आप बार बार रीड करोगे तो खुद ही अंडरस्टैंड हो जाएगा. समझाने जैसा कुछ है नहीं, और इसको जितना ज़्यादा हम पढ़े उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा. सो मैंने फास्ट इसलिए रीड किया है, और जल्दी चैप्टर ख़त्म करते हैं. बाय.